Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, staying safe, staying healthy, and rooting for Sushant Singh Rajput and many more who deserve to get justice. उस लिस्ट में एक और नाम obviously ऐड हो चुका है, which is very very sad कि जिस तरह से one second. Okay, are you able to hear me? Let me know if you are able to hear me. Uh, hello. Okay, all right. Looks like we are. So yes, जैसे कि मैं कह रहा था, एक और नाम उसमें ऐड हो चुका है. सलोनी फोगट का. आई डोंट नो अगर आपको मेरी आवाज नहीं. लेट मी सी. सोनाली फोगट. ओके. यस, सोनाली फोगट आवाज आ रही है. ठीक है, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, यस, एक और नाम ऐड हो चुका है सोनाली फोगट का, which is very sad. Very very heart breaking to see all the clips, all the videos, everything that are coming out. और इस तरह से. अरे एक मिनट भाई. All right, 1 second. Okay, I'm gonna take you in 2 minutes. So जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला सेशन मैं ओपन सेशन रखना चाहता था, इसलिए भी क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा था, विल आई हैव दोज ओपन माइक सेशंस, या हमें आके बात करने का मौका मिलेगा, हम लोग कर सकते हैं. तो यस, आई विल बी डूइंग दोज सेशंस एज वेल. सो ये 30 नहीं है, ये वो वाला सेशन नहीं है जहाँ पर इट्स गोना बी वन वे. दिस इज गोना बी अ टू वे. एक्चुअली ये भी वन वे होगा, जहाँ पर मैं सुनना चाहूँगा, मैं चाहूँगा आप लोग आए, बात करें, अपने व्यूज़ ओपिनियन रखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. स्पेसिफिकली आज का ये जो सेशन है, ये उस पीआर के लिए है. उसको बॉलीवुड कहे, उसको पॉलिटिकल पीआर कहे, उसको कुछ भी कह सकते हैं आप. यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट टू. बहुत अटैक हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास. कुछ स्पेसेस हो रही हैं ट्विटर पे, कुछ ऐसे चैनल, कुछ ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो सुशांत की फैमिली, सुशांत की इस मूवमेंट, बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट, सबको क्वैश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. देयर कॉलिंग अस ऑल बॉट्स, देयर कॉलिंग अस ऑल वेला लोग, जबकि एक्चुअल में दे आर द वंस हु आर द वेला पीपल हु मे बी आर गेटिंग पेड एज वेल. इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा इश्यूज हमारे सबके बीच में आ रहे हैं. द सैडेस्ट पार्ट इज पीपल who supposedly, और ये आई थिंक दिस इज नॉट न्यू, एटलीस्ट नॉट न्यू टू मी एंड नॉट न्यू टू पीपल जो शुरुआत से इस मूवमेंट में जुड़े हैं, कि हमारे बीच में हमारे साथ लोगों को इस तरह से बिठाया जाता है, उनको ऐसा दिखाया जाता है दैट दे आर द बेस्ट orators, they are the best speakers, they are the best motivators in this movement. और उसके बाद वो अपना असली रंग दिखा देते हैं, बिकॉज ये पहले भी हो चुका है बहुत बार. और आई हैव बीन विटनेस टू ऑल ऑफ दिस. बहुत सारे लोग आएंगे इस मूवमेंट में, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, दिखाएंगे कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. बट व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, थोड़ी देर के लिए तो मुखौटा पहना जा सकता है. देयर आर पीपल हु can wear that mask for like maybe 3 months, 6 months, maybe max 1 year, but eventually वो मुखौटा उतर जाता है. और वही हुआ बहुत सारे ऐसे कुछ supposedly so called warriors का, जो अपने आप को warriors कहते थे. और मैंने 2-3 दिनों से ट्वीट्स भी कर रहा हूँ, because I'm gonna be vocal about it, because I've seen it, I've been there, I've done that, and I've witnessed everything. So इसलिए uh, yes, Carolyn, you have been there, you have seen it right from day one. बचे हैं वही गिने चुने कुछ कहते हैं ना लोग, जो they are used to all this, and we don't get bothered. प्रॉब्लम इज, क्योंकि हम लोग सब देख चुके हैं, तो हमने ये भी साथ में देखा है कि किस तरह से ये जो हैंडफुल ऑफ कल्प्रिट्स हैं, ये जो ट्रोलर्स हैं, ये जो बुलीज हैं, ये किस तरह से आते हैं, किस तरह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं.
उसके बाद ये और लोगों को खराब करके उनको एक डायरेक्शन गलत देते हैं, और वो गलत डायरेक्शन पकड़ने वाले लोग उस उन्हीं की गलत डायरेक्शन पे चलने शुरू हो जाते हैं, एंड दे इवेंचुअली फॉरगेट कि वो आए क्यों थे। बहुत कॉमन है ये आज की डेट में भी, बहुत सारे मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हैंडल्स देख रहा हूँ, जो कभी किसी टाइम पे जिनको थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी मिलनी शुरू, और क्रेडिबिलिटी का भी आई हैव सीन इट, दैट दे यूज सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, वहां पर जाएंगे, वो एक सर्कल बनाएंगे जहां पर अपना वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे खुद का, साथ में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अपना रियल फेस दे जस्ट शो द रियल फेस इवेंचुअली। सो झूठ एक एक पॉइंट तक ही चलता है, एंड आई थिंक दिस इज द सेम मॉडस ऑपरेंडी जो एक बॉलीवुड कबाल का भी चल रहा है। बॉलीवुड में भी यही होता है। दे हैव सो मेनी पीपल, दे विल सेंड यू। सुशांत के साथ क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती वाज अ प्लॉटेड पर्सन, गई एंड पूरी जिंदगी खत्म कर दी, जिंदगी खराब करके रख दी। और आज की डेट में हम स्पेसेस पे जाते हैं तो वहां पर लोग हमें ट्रोल ये करते हैं कि रिया की जिंदगी हमने खराब कर दी, रिया को हमने बदनाम कर दिया, बेचारी लड़की, बेचारी लड़की। उस बेचारी लड़की ने ड्रग्स दिए, उस बेचारी लड़की ने सुशांत की इवेंचुअली लाइफ तक लेने की कर दी। अ, इस टाइम पे हमें उसके लिए भी अटैक्स सुनना पड़ रहा है। और साथ साथ कल की एक एक स्पेस के बारे में मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा, क्योंकि सारे जो लोग यहाँ पर यूट्यूब पे आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग भी स्पेसेस में हो। ट्विटर स्पेसेस की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर बहुत स्पेसेस होने लग गई हैं अब, और डिफरेंट डिफरेंट हैंडल्स। द सैडेस्ट पार्ट इज मोस्ट ऑफ देम आर ब्लू टिक हैंडल्स। तो ब्लू टिक हैंडल्स भी अब स्पेसेस करते हैं, एंड दे बैश, दे लिटरली, मतलब उनकी वर्डिंग भी यू नो इतनी गंदी और इतनी वाहियात वर्डिंग है, इतनी इतनी चीप बातें कर रहे हैं। दे आर अटैकिंग सुशांत, सुशांत कैरेक्टर, सुशांत फैमिली। और आज की डेट में दे आर अब्यूजिंग, लिटरली मेकिंग अ मॉकरी एंड फन ऑफ एवरी एसएसआर वॉरियर अराउंड द वर्ल्ड। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है, जो सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की मूवमेंट, ये किसी किसी की लीडर की या किसी एक एक पार्टी की या किसी एक ग्रुप की नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है जहां हजारों करोड़ों लोग दुनिया भर में बैठ के दे आर स्पेंडिंग देयर ओन टाइम, देयर ओन मनी, देयर ओन एफर्ट दे आर पुटिंग, एंड दे आर ट्राइंग टू रेज वॉइस फॉर सुशांत। बट ये जो कुछ गिने चुने लोग हैं, इनको अब पता लग गया है कि बॉयकॉट बॉलीवुड हैज बिकम द नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट, थैंक्स टू सुशांत की जस्टिस की फाइट, कि हम सब की आंखें खुल गई हैं। और आज की डेट में जिस तरह से ये उस बॉयकॉट बॉलीवुड को भी बैश कर रहे हैं, इट इज रियली रियली वेरी सैड एंड सिकनिंग टू सी। uh, the only thing that I have always been talking for the last 1 week, I would say, और मैं आज फिर वो थोड़ा रिपीट करूंगा guys, they are instigating us all, they are trying to poke us all, they are trying to irritate us, ताकि हम कुछ ऐसा बोलें, कुछ ऐसा करें जिस वजह से या तो हमारा चैनल या हमारा ट्विटर हैंडल या हमारा फेसबुक प्रोफाइल, whatever, wherever you are, whatever social media platform you're using, वहां पर हम ब्लॉक हो जाएंगे। देर आर इंसिडेंट्स नाउ, I've heard people have been blocked, people have their accounts have been suspended. Yes, कुछ लोगों के सस्पेंड होने भी चाहिए, and I'm completely supportive of that. If somebody is abusing, if somebody is using bad language, or if somebody is falsifying information, झूठ बोला जा रहा है, उनके अकाउंट सस्पेंड हमेशा के लिए होने चाहिए, and I support that cause. बट अगर कोई आवाज उठा रहा है जस्टिस के लिए, चाहे वो जिया खान के लिए हो, चाहे वो सुशांत के लिए हो, चाहे वो किसी भी ऐसे के लिए हो, they have to be supported, they have to be saved. We cannot let all these handles and we cannot have these voices shut down. So please be mindful. I know there are people who want to join and I will take them right away. Rinki ji, आप जो कह रही हैं, what do you think? This is what Arjun was talking about.
Absolutely yes. This is what I said last week when I started. ये जो अर्जुन कपूर ने एक तरह से इनफॉर्मल धमकी दी है कि हमने बहुत देर इनको सह लिया एंड वी शुड हैव गॉटन टुगेदर. आई थिंक दिस इज फेज वन ऑफ देयर अटैक. दिस इज फेज वन ऑफ हाउ दे विल हैंडल अस, क्योंकि और तो उनके पास कुछ है नहीं. यू नो, मोस्ट ऑफ देम आर अनएजुकेटेड पीपल. उनके पास सिर्फ सिर्फ दो चीजें हैं, एक पैसा, दूसरा अग्रेशन या अब्यूजिव लैंग्वेज. दोनों चीजें वो फुल फुल कहते हैं ना थ्रॉटल पे यूज कर रहे हैं. दे आर गोना मेक श्योर कि हमें वो अब्यूज करें, गाली गलौज करें, लोगों को पोक करें. Most of them, a lot of them actually, not most, a lot of them will create these, you know, temporary IDs ताकि अगर वो ब्लॉक भी हो जाए, सस्पेंड भी हो जाए तो उनको प्रॉब्लम ना हो, because the real handles जो उनके हैं उनको वो भी सेव कर रहे हैं. एंड वी विल कंटिन्यू टू फाइट बैक. यू नो, कल की स्पेस की जिसकी मैं बात कर रहा था वहां पर सुशांत की फैमिली के बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया गया, अब्यूजिव टोन में. और इस तरह से दिखाते हैं जिस तरह से you know, they have there should be cases on the family rather than रिया चक्रवर्ती. और you know, बेचारी लड़की बोला गया, you know, कि उस बेचारी का करियर, उसकी लाइफ खराब करने पे तुले हुए हो तुम वॉरियर्स. एंड हमें और भी कहा गया कि you know, किस तरह से हमने इस पूरे केस को अपनी हिसाब से यू नो मूव किया है. हमारी वजह से बहुत कुछ चीजें हो रही हैं. यू नो, सोनाली फोगाट का केस, उसके लिए भी कहा जा रहा है, उसके लिए भी ट्वीट किए जा रहे हैं कि बी केयरफुल. यू नो, सोनाली फोगाट की फैमिली को कहा जा रहा है कि प्लीज बी केयरफुल कि कहीं वॉरियर्स, SSR वॉरियर्स ना आपके साथ कनेक्ट हो जाए एंड देन दिस इंटायर कॉज माइट बी यू नो चेंज. अनफॉर्चुनेटली फॉर दोज पीपल, दे डोंट रियलाइज सोनाली फोगाट की खुद की यू नो फैमिली, उनकी खुद की सिस्टर आई थिंक हैज बीन फॉलोइंग सुशांत सिंह राजपूत केस, और उनको खुद को उसकी डेथ में, उसके मर्डर में सिमिलैरिटी दिख रही है सुशांत की यू नो मर्डर के साथ. सो इट्स नॉट अस हु इज डूइंग और हु आर डूइंग एनीथिंग, इट्स द फैमिली दो फील. Exactly, Caroline. That's the saddest part. Everybody is getting suspended. Okay, you know what? I will take all of you. Let me just take both of you. Hello, Abhishek, and hello, Mia. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. कैसे? बस बढ़िया सर, आप सुनाओ. सर बस ये बताएं क्या कहना चाहेंगे. बस सर यही कहना चाहेंगे, ये जो सोनम महाजन है, बॉलीवुड की PR, और इसके क्या नाम है, जो हमने जो रिकॉर्डिंग की थी कल, मेरी जो की थी वो सारी प्रियंका दीदी को जा चुकी हैं. तो होप की एक्शन भी होगा इनके खिलाफ. तो ये कुछ भी आके बकवास करेंगे सुशांत की फैमिली के बारे में, उनके फादर के बारे में, इनको किसी ने हक नहीं दिया उनके रिलेशन के बारे में इधर बकवास करने के लिए अपनी स्पेसेस में जाके. और इतना ही दम है, आप ब्लॉक क्यों कर रहे हो सभी को? आप डर गए हमसे, SSR आर्मी से आप डर चुके हो. ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा. हालांकि अभिषेक ने एक नाम यहाँ लिया है, यू नो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दिस इज जस्ट वन आउट ऑफ द मेनी. और इस तरह हम नाम लेके, यू नो, लेट्स नॉट जस्ट यू नो शेम एनीवन लाइक दैट, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये लोग क्या करेंगे कि इस ऐसी चीजों को भी हरासमेंट में डाल के दे विल ट्राई टू गेट द वीडियो यू नो अपलोडेड, दे विल ट्राई टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो लेट्स ऑल बी वेरी केयरफुल कि हम जब बात कर रहे हैं सबको पता तो चल जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये PR वाले इतने निकम्मे हैं, इतने ज्यादा. यू नो, द फनी पार्ट, यू नो, जो अभी अभिषेक बात कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा था, सारे दुनिया के लोगों को ब्लॉक करी जा रहे हैं ये बंदी. बट लास्ट आई सॉ इसने मुझे फॉलो कर लिया है, तो लगता है कि यू नो मेरे थ्रू ये शायद वो एक्टिविटीज को यू नो ऑब्जर्व करना चाहती है कि और क्या हो रहा है. बट अदरवाइज एवरीबडी इज बीइंग ब्लॉक्ड लेफ्ट राइट सेंटर. और ये सबसे बड़ा जो होता है ना, एक लेट मी पुट इट, यू नो, मैं भी ब्लंटली आज बात कर ही देता हूँ. जो सबसे कायर लोग होते हैं, जो सबसे फट्टू लोग होते हैं हमारी लैंग्वेज में, और ये वर्ड मैं बहुत यूज करता हूँ,
जो सबसे फट्टू लोग होते हैं वो लाइफ में क्या करते हैं, स्पेशली मैं ट्विटर की बात करता हूँ। ट्विटर के ऊपर सबसे पहले वो अपना प्रोफाइल पे लॉक लगा लेते हैं। दूसरा, फिर वो उन लोगों को ब्लॉक कर देते हैं या उन लोगों को अनफॉलो कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आप वो भी नहीं देख सकते कि उनके वो कर क्या रहे हैं। बट वो ऑन द अदर साइड, बिकॉज यू हैव योर मॉरल वैल्यूज, यू हैव योर एक एक वो कहते हैं ना, अपना तरीका होता है आपका। आप नहीं उस तरह से कुछ करते, तो दे कैन स्टिल सी व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर टाइपिंग, व्हाट यू आर ट्वीटिंग। बट ये लोग इतने फट्टू, इतने ज्यादा वीक होते हैं कि ये आएंगे भी झुंड में, ग्रुप में भी झुंड में, बातें भी करेंगे तो झुंड में, सेशंस भी करेंगे तो झुंड में, स्पेसेस में भी जाएंगे। तो कल की स्पेस की जिसकी अभी अभिषेक बात कर रहा था, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था कि 4-5 लोग थे, फिर एक वॉरियर किसी को जैसे अंदर घुसाया जाता है, जब तक उसको अच्छे से ग्रिल नहीं किया जाता, या जब तक उसको पूरा हर तरह से एम्बैरस नहीं किया जाता, या तब तक उसको अकेले वहां रखेंगे। तो और खुद 4-5 लोग एक दूसरे को क्रिस का टॉक क्रॉस टॉक करके दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल डाउन। बट अनफॉर्चुनेटली ये फट्टू लोग, ये इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते कि ये लोग ग्रुप्स में आए। और कुछ तो ऐसे लोग हैं, इतने बुरे हाल है उनके, दे बिकम फ्रेंड्स, दे बिकम योर बडीज। अब जैसे फॉर वट एवर रीजन मेरे को अनफॉलो नहीं किया गया या मुझे ब्लॉक नहीं किया गया, तो कुछ रीजन होगा। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, आपकी पर्सनल चीजें, आपके पर्सनल, कई बार इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, you share some personal details या you share some personal चीजें अपनी लाइफ के बारे में। ये फट्टू लोग फिर उन पर्सनल चीजों को पब्लिक डोमेन में जाके शेयर करके आपको ब्लैकमेल करते हैं या दिखाते हैं कि व्हाट, हमारे में पावर है। इसलिए भी मैं कहता हूँ, ऐसे सेशंस में और भी करता हूँ जहां पर मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे आप किसी को भी अपना फ्रेंड, अपना कॉन्फिडेंट नहीं मान सकते। maintain that relationship, of course you maintain that relationship, but do not make them your best friends, your allies, ऐसे कि और उनके साथ पर्सनल कुछ भी शेयर मत करें। आई हैव पर्सनली विटनेस दैट। मैं तो खुद मैं आई स्टिल डोंट फॉरगेट दोज डेज व्हेन कुछ लोग ऐसे मेरे साथ मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर घुसना चाहते थे, मेरे साथ बातें इस तरह करते थे, मेरे फैमिली तक के साथ करते थे। बट दिस इज हाउ आई वाज सेव्ड बाय सम मोर पीपल, जिन्होंने मुझे उस टाइम पे ये ज्ञान दिया था। और आज भी मैं यही कहूंगा, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ है। डोंट ब्रिंग योर पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया। आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप, मैं तो यहाँ भी बोलूंगा, जिसने टीवी देखना है, जिसने मूवी देखनी है, हैरानी की बात होती है। लेट मी जस्ट से इट वन लास्ट थिंग बिफोर आई लेट अदर्स टॉक एज वेल। बट लोग मूवी रिव्यूज दे रहे हैं, रिव्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि मूवी रिव्यूज, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नाम लेता हूँ, एक जहां भी बैठा है, दुबई में बैठा एक यूट्यूबर है जो मूवीज रिव्यू करता है, वो भी तो मूवीज जाके देख रहा है, वो भी तो कर रहा है। तो व्हाट डू वी बैश हिम? नो, ही इज वॉचिंग द मूवी, ही इज गिविंग द वर्स्ट एवर क्रिटिक टू दैट मूवी। सो हम उसके भी सुन के हम भी हंसते हैं, टाके लगाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So stop wasting time on everything and focus on the main goal. सुशांत के लिए लड़ो, करो जो करना है। अगर आपको किसी के साथ मिलके कुछ करना है, मिलके करो। इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल। Do not share your personal details, do not share your personal life with them. The moment you do it, the moment you make them feel that they're very important in your life, these people will backstab you, they will use you, abuse you। और कई बार क्या कहेंगे, मुझे मेरे इसकी कसम, मुझे मेरे उसकी कसम, मैंने कुछ नहीं किया, बट they are the culprits and I'm gonna be very open about it. Sorry, I think even I spoke a lot, so yes, Abhishek, bolo, please go ahead. बिल्कुल सर, आपने सही बोला। नाम नहीं लेना चाहिए इनका, क्योंकि ये है भी नहीं इसलिए कि इनका नाम लिया जाए। एंड सीधी सी बात है कि जो भी सुशांत की फैमिली के खिलाफ बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पेड पीआर क्यों ना हो, चाहे वो बॉलीवुड में से कोई क्यों ना हो पेड पीआर। तो
हमारा तो बस यही है कि इन लोगों ने जिस तरह से कल रात को ये इनकी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक स्पेस चल रही थी, तो एक स्पेस चल रही थी इनकी, तो हमने भी आज एक हैशटैग चलाया है। मैं आपने नाम लेने की मना किया है, लेकिन मैंने स्लैश बेवफा है, तो वो मैंने हैशटैग चलाया है हम सभी एसएसआरियन ने, तो वो अभी ट्रेंड भी हो रहा है। तो जैसे ही हम नाम लिखते हैं तो वो आ जाता है बेवफा है, तो वो हमने ट्रेंड चलाया है एसएसआरियन ने, क्योंकि इन्होंने एसएसआरियन से पंगा तो ले लिया है, लेकिन शुरू उन्होंने किया है, खत्म एसएसआरियन करेंगे। म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। यस, करते हैं इसके बारे में बात। यस मिया जी, प्लीज गो अहेड। मिया जी, मिया, यू आर म्यूट। Just button because I need to go to the hospital. Okay, sure गिरिजा जी। Okay. Exactly. आयुष, I'll take गिरिजा जी, उसके बाद आपसे करते हैं। Please Just go 2 ahead. minutes. Yeah, Just yeah, 2 please. minutes. Yeah. So I understand that all of us are upset because they are doing it, but then it is expected. They have a lot of money and they have a lot of idle time, and they are not working for their life like we all do. So we have to work and at the same time balance. And because we are so passionate about this cause, we are concerned about this. That is why all of us give so much of our time. And we are all united for a cause. They are not united for any noble cause. They are united for their selfish ends. So they will all disintegrate. Only thing is, when they have jumped into the bandwagon, it is possible that our focus is diverted because we are getting back at them. No, let us focus only on SSR movement. Keep on writing to Modi ji. Keep on writing to Amit Shah, not even CBI, because CBI is not bound to answer us. But our elected representatives are bound to answer us. They have to find it from the CBI and let it know to us. So keep on appealing to them. We know that they are working for the good. There are impediments, but if we keep on persisting, then it becomes clear to the public how much we are persisting. So they will understand the pressure that the central government is also going through. And so both the factors will work together and we'll be able to get justice. So, suppose we are working on something huge. आप कुछ काम करते हो, नीचे something is coming and biting you. You will just ignore it, right? You'll just push it away and focus on your work. That is it. All these are small kide makode. Just throw it. Don't even bother about them. Just ignore them. They are not in our ecosystem at all because they are not there for any good. We are there for each other and we have to stand for each other. Let us just not focus on them. Focus on what we should. We only talk positive things about Sushant. We only talked about what all went wrong in Sushant's case. Why we are giving with facts why it was a murder. They are simply saying, "Have mein tir maar rahe." Just it is not murder. That's it. But do they have anything to say that it's a suicide? Do they have anything to prove that it's a suicide? Nothing. Nothing. But we have got so many things to say that. So we just keep continuing. I'm sure something will emerge out of it. Good results will emerge out of it. We have to be by the side of the family, supporting them, making it clear to them. So it doesn't mean we have to attack them, but we are defending them. We are with them all the time. That's So all one, is necessary. yeah. So one question I'll put to you, right? I mean, while most of us and a lot of us try, Girija ji, that we don't respond to such people, such trollers and abusers. The problem right now is uh, the kind of allegations they're putting around Sushant. They are tweeting, retweeting, वो तो चलता ही रहता है इनका, but उसके साथ now in the spaces they're trying to influence. Now, a lot of people from within the SSR Warriors family, they go, they listen. अगर मैं वही कहता हूँ, again, I'm gonna be very like low on the number, but अगर 1% भी लेके चलो, 1% of those people get influenced कि यार, there are, and I can give you names actually. There are people within us who were actually so pro Sushant Singh Rajput movement, this justice fight. Right now, the same people, and with names I can tell you actually, the same people are now abusing, and they are saying, okay, the questions should be asked to the sister, the questions should be asked to the father. Unko bhi question karo. Yahan,
I mean, they've completely changed their narrative as well. Varun, हमारी problem, yeah, there were such people before also. We remember who were blaming the parents and father and the sisters, and we all continuously went on talking about it, and then it subsided. So again, in between, ऐसे कुछ उड़ेगा, but they will come back. I'm very sure. hopefully, Yes, hopefully. yes. But for that reason, if we keep on talking about them, then we are also diverting, right? So True. let us make our voices louder, so theirs is drowned. That's it. Just not Perfect. they say that these people are asking questions. Just drown their voices with our positivity. That's it. Great. Yeah. I think that's what we should all try. Yes, because Sure. I'm Thank you. rushed, I'm Girdjar. leaving. Yeah, So yeah, I yeah. can We'll talk. listen to We'll you, talk. but I cannot talk. Yeah. Sure, sure. No worries. Yes. Take Yes. care. Thanks. Thank you. Yeah. All right. Mia, let's try again if we can hear you, and then I'll take Ayush. Hi, good morning, everyone. Good morning. Yeah, I'm 100% agree with Girijaji because I also went to that space, but I can't listen to anything against Susan. So for me, we should go there for 2 minutes, then report that space and leave. So Absolutely. that's what we should do. Bilkul. So that's why I came to talk to No, you. no, absolutely. And I'm sure whatever you would have heard, Mia, I mean, it was definitely very, very shameful to even hear such things. And even with all dignity and humility, some of us tried to explain it to them. I think, they are not ready to hear because they have come there with an agenda. They have not come here to bring some facts or logic on the table. They've come there to just, influence people with a wrong agenda. And you're right, like Girjaji said also, right? I mean, I agree that we should just try with our positivity and with our, might, that we just report them and we come out. We should not be there to support or, even listen them for a longer time. I think even I should learn that and make sure I don't do that. So Yeah, I go to spaces to listen about SSR case, maybe I'm gonna something positive today. So yeah, if they're talking about against SSR, no way. I'm not gonna stay there and listen their bakwas. bilkul. Yeah, that's uh, why I came. And thank you, Varunji, giving thank me you, the. Mia. Thank you, Mia. Thank you so much. Appreciate that. हाँ जी आयुष, कैसे हैं आप? बोलें. हेलो, हेलो. नमस्ते सभी को। नमस्कार. और जिस तरह से ये कल देखा ड्रामा कि इन लोगों ने स्पीच चालू किया बिना किसी फैक्ट्स के। अरे बेवकूफ़ों, ये लोग पागल हैं क्या, जो पिछले 2 सालों से इस तरह से मूवमेंट चला रहे हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करा रहे हैं। हाँ, तुम लोग महान हो, हम लोग पागल हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं हम लोग पागल हैं, हम लोग पागल। क्या करोगे? हमें रोकोगे? एसएसआर की फैमिली को रोकोगे? कोई हक नहीं बनता, क्योंकि एक फैमिली अपने बेटे अपने भाई की जस्टिस की लड़ाई लड़ रही है। एक पूरा समझ लीजिए कि पूरा यूनिवर्स एक हीरो की जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, और अगर आप इसमें कुछ कर नहीं सकते ना अच्छा, तो कुछ बुरा एटलीस्ट बोले ना, क्योंकि आपको ये हक नहीं दिया किसी ने बोलने का। अगर हम लोग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चला रहे हैं तो ये हमारी मर्जी है, क्योंकि जब एसएसआर की डेथ हुई, नॉट एसएसआर, इंडिया में जो भी वैलिड चीजें हुई उस पर ये इंडस्ट्री चुप रहा, चाहे वो कन्हैया लाल जी का हो, एसएसआर हो, चाहे वो एसएसआर के डेथ के कुछ दिन बाद जो गलवान घाटी में हुआ, उन सारे इंसिडेंट में ये इंडस्ट्री चुप रहा। ये इंडस्ट्री किस मुद्दे पे बोलता है? ऐसे मुद्दों पे बोलता है जिसमें कोई सिर पैर नहीं होता है, जो पॉलिटिकल हो। तो बस लास्ट में यही कहूंगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू आयुष। और आज मैं देख रहा था, सुबह से यही चल रहा है सोशल मीडिया पे भी। जब से मैं देख रहा था, मैंने सारा तो फॉलो अप नहीं किया, पर मैंने इतना ज़रूर देखा कि लोग आर रियली रियली एंग्री विद ऑल दीज ट्रोलर्स। और उसके चक्कर में मैं फिर वही कहूँगा, ये ना हो कि उस गुस्से में, उस एक एंग्जाइटी में हम लोग कुछ ऐसा स्टेप करें जिसकी वजह से हम खुद अपना अकाउंट या अपना हैंडल सस्पेंड करवा दें। तो प्लीज़ लेट्स ऑल बी वेरी केयरफुल अराउंड व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर सेइंग।
और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग आए थे सुशांत के लिए। सुशांत का मैंने कल भी बोला था और मैं बार बार एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह मैं ये बोलता रहूंगा। सुशांत ने एक बार, अभी तक तो मुझे सिर्फ एक ही बार दिखा है, व्हेन ही गॉट एंग्री ऑन समवन ऑन सोशल मीडिया, द ओनली गाली, द ओनली अब्यूज अगर मैं कहूं जो सुशांत ने कभी दिया वाज एन इडियट। ही कॉल्ड अ पर्सन एन इडियट, कि इडियट तेरे से बड़ा राजपूत तो मैं हूं। ये उस टाइम की बात है जब एक मूवी आई थी और उसके लिए सुशांत ने एक जस्ट टू शो हिज सपोर्ट फॉर हिज फ्रेटर्निटी, उसने बोला था कि मैं अपने नाम से सुशांत के साथ राजपूत हटा दूंगा। उस टाइम पे किसी ने कुछ उसको बोला था, जिसको जवाब में उसने बोला था कि तू इडियट, ऐसा नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इवन व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग समबडी लाइक सुशांत, ट्राई टू बी लाइक सुशांत, ट्राई टू इम्बाइब हिज क्वालिटीज, उसके हिसाब से, उसकी तरह से लोगों को करने दो। आई नो एक आइडियोलॉजी होती है वो जो सब कहते हैं कि अगर एक गाल दो, एक थप्पड़ मारो, एक गाल दो, दूसरा आगे कर दो, ऐसा नहीं होता। तो फिर उसके साथ ये भी है कि बी इन योर लिमिट्स, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ, नंबर्स जो है हमारे पास वो वैसे भी कम है, एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वी हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट। हम उतने नहीं हैं, पर जितने हैं हमें उनको साथ रखना है, उनको बचाना है, उनके हैंडल्स को बचाना है, उनकी वॉइसेस को बचाना है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आप जो भी बोलें, जो भी करें, वो एक दायरे में करें, एक लिमिट में करें, बिकॉज एंड ऑफ द डे इफ यू बिकम, एंड अगेन दिस इज जस्ट अ सजेशन, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, आप कौन है, कैसे है, दैट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन जज यू ऑन, एंड आई डोंट वांट टू इवन जज यू ऑन। आपने जो करना है आप वो करेंगे ही, बट अगर आप इस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट, इट्स नॉट वरुण, इट्स नॉट अभिषेक, इट्स नॉट आयुष, इट्स नॉट अभय, वी आर ऑल रिप्रेजेंटिंग ओनली एंड ओनली सुशांत। और सुशांत के लिए हमें अपनी थोड़ी सी इन चीजों को, क्या गुस्सा नहीं आता, मुझे भी आता है, आई एम श्योर अभिषेक को भी आता है, अभिषेक का भी थोड़ा दिखने लगा था कि शायद अभी बोल देगा कुछ, राइट, क्योंकि गुस्सा सबको आता है। अभी मिया आई, she also mentioned she got angry about it, but उस गुस्से को चैनलाइज करो, सही तरीके से चैनलाइज करके get the things done. So yeah, thank you आयुष। yes, खंबागणी अबे भाई क्या कहेंगे? खम्मा गणी मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है जी, लाउड एंड क्लियर। आ रहा है। हाँ, तो मैंने भी उनके स्पेसेस, कुछ 2 स्पेस किए थे उन्होंने, जो मैंने भी अटेंड किए थे कुछ देर के लिए। तो मैंने नोटिस किया एक चीज कि भाई जब भी उनके साइड का कोई बंदा अगर बोल रहा होगा तो वो बीच में बिल्कुल टोकेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं टोकेगी वो। और जब हमारे साइड का कोई बंदा बोल रहा होगा तो वो बीच बीच में टोकेगी। अगर मैंने भी इसके स्पेस में बात की है, मैं बताता हूँ। जब भी आप फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, तथ्य के ऊपर बात करेंगे, तो एक तरीके से आपको काटने की कोशिश करेगी वो। जैसे कि मैंने एक जो तथ्य रखा था उसके स्पेस में कि भाई रिया ने अप्रैल में बोला था कि भाई वो सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो केवल फ्रेंड है, और जो जुलाई आते आते उसमें वो बोलने लगी वो गर्लफ्रेंड है। तो उसने मुझे रिप्लाई किया, अरे बॉलीवुड में ऐसा ही होता है, सब लोग छुपाते हैं रिलेशंस। और एक बंदे ने जब उसको लगा कि भाई ये तो थोड़ा सही बात कर रहा है, इससे कुछ और चीज निकलवाई जाए, तो उसने मुझे बोला कि भाई ये 2 साल हो गए आपको ये चीज करते हुए, आपको क्या लगता है कितने लोगों ने मारा होगा, उनका नाम क्या हो सकता है, आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? तो यहाँ पर मैं समझ गया कि ये बंदा आखिर चाह क्या रहा है। ये बंदा चाह रहा है कि भाई मैं किसी का नाम लूं और ये उस पर काउंटर क्वेश्चन करे कि भाई आपको कैसे पता है ये इन्वॉल्व है या इसी ने मारा है या इसका कुछ ना कुछ हो सकता है केस में। तो ताकि ये उसी पर काउंटर क्वेश्चन करें। मैंने भी दिमाग लगाया और मैंने भी ये बोला कि भाई सीबीआई इसीलिए तो लाई गई है ताकि कौन इन्वॉल्व है, किसका क्या कनेक्शन है, वो पता लगाया जा सके। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि भाई अपना दिमाग लगा करके थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके उनको रिप्लाई करना है, ताकि क्या है कि भाई जैसे ही आप थोड़ा अच्छा रिप्लाई करेंगे तो वो आपको या तो लिसन पर डाल देंगे या आपको बीच बीच में रोकेंगे।
कल भी मैंने यही चीज नोटिस करी कि भाई कोई फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा था, तथ्य के ऊपर बात कर रहा था, तो वो बोली आपको कैसे पता है, आपको कैसे पता है, आपको कैसे पता है। और जब भी आपको सही बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टोकना चाहेंगे, टोकेंगे आपको, तो आपको कैसे पता है। जैसे आप सही बात बोलेंगे कि भाई ये हमने रिसर्च किया है, पब्लिक डोमेन में सारी जानकारी है, तो वो उस पर भी काउंटर करेंगे कि भाई ऐसा कैसे होता है, ये तो सब इलॉजिकल है, ये सही नहीं है। तो आपको भी थोड़ा तथ्य के ऊपर बात करना है। वैसे तो हम तथ्य के ऊपर ही बात करते हैं, जो हमारे लिए तथ्य होते हैं ना, वो उनको वो ज्यादातर इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई इनके तथ्य हैं वो हमारे ऊपर भारी पड़ेंगे। तो आपको भी वैसे तो उनके स्पेस में जाना नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से हमको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल का उन्होंने स्पेस किया था कि भाई उन्होंने एसएसआर वॉरियर्स ने नया विक्टिम ढूंढ लिया है प्राइवेसी के लिए। तो कैसे न कैसे करके वो हमको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमको भी साफ साफ नजर आ रहा है एक तरीके से। तो अगर आप उनके स्पेस में जाना भी चाहें तो आप जा सकते हैं, या आपकी इच्छा है आप जाए या नहीं जाए। मैं तो बोलूंगा कि ऐसे के स्पेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये 10 के 20 में आप एक को बैठा देते हैं, ताकि जैसे ही उधर से 4 क्वेश्चन करेंगे, इधर से 3 क्वेश्चन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे मैं रिप्लाई किसका करूं। इसलिए ये एक बार में एक ही जने को लेते हैं, बाकी सबको नहीं लेते। जैसे उनको लगता है कि हाँ इनको इसको बहुत कर लिया है, अब इसको नीचे डालो, किसी और को लो। तो ऐसा ऐसा ये लोग करते हैं। और जैसे इनको पता लगता है कि भाई अब इनके फैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, या हमारे स्पेस में ये लोग ज्यादा हो गए हैं, तो या तो ये स्पेस एंड कर देते हैं, या सबको किक आउट कर देते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप ना जाएं तो ही ठीक रहेगा। हाँ, नहीं जैसे अभी कहा इवन मियाँ जी ने बोला कि आप जाएं वहाँ 2 सेकंड के लिए, रिपोर्ट करें। रिपोर्ट तो आप बिना ज्वाइन करे भी कर सकते हैं, बट इफ यू नो ऑलरेडी कि क्या चल रहा है, बट अगर आप 2 मिनट के लिए सुनना भी चाहते हैं, सुनो कि क्या बकवास चल रही है, एंड देन काउंटर देम विद फैक्ट्स। बट काउंटर फैक्ट्स से करने के बाद भी, जैसे अभी अबे ने बोला, किस तरह से काट रहे थे, किस तरह से, आपको कैसे पता, आप हो सीबीआई, आप हो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप हो पुलिस, बहुत कुछ हुआ कल उस स्पेस में। बट अगेन लेट मी जस्ट आंसर व्हाट वन क्वेश्चन दैट प्ले विद विहान इज सेइंग कि ये वाला सेशन, अगर आप इस सेशन का टाइटल देखें, दिस इज हाउ द बॉलीवुड जो जो कबाल के लोग, जो पीआर के लोग अटैक करना शुरू हो गए हैं। चाहे वो ये स्पेसेस हो, चाहे वो यूट्यूब सेशंस हो, चाहे वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स हो, चाहे वो फेसबुक पे पोस्ट हो, जहां पर भी हमें ऐसे ट्रोलर्स, बुलीज मिल रहे हैं, हाउ टू काइंड ऑफ हैंडल देम, व्हाट टू डू इज व्हाट द टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज। किलर्स के बारे में यस वी आर गोना टॉक अबाउट इट एज वेल, वो अलग सेशंस होंगे, वहां पर बहुत सारी बातें होंगी। पर यहाँ पर द प्रॉब्लम इज we are being manhandled, we are being abused, sometimes by these paid PR, sometimes by the unpaid PR, sometimes by people within us, हमारे बीच में जो बैठे हैं। तो उसके बारे में ये है, एंड उसके बारे में हमें बात करनी है। हाँ जी अभिषेक बोलो, एंड देन आई विल टेक चिताली। सर आई एम ऑलरेडी, सर आपने बोला मैं नाम नहीं लेना, तो मैंने रिसर्च की है इसमें कि शी इज सपोर्टिंग पाकिस्तान ऑलरेडी, एंड क्रोम में जाके कोई भी सर्च कर सकता है, तो उसको मिल सकता है इनके बारे में जो भी है। तो शी एक्चुअली सपोर्ट पाकिस्तान एंड हेट इंडिया। तो इसका इंडिया के खिलाफ बहुत चीजें हैं जो इन्होंने बोली है, तो वो भी आई थिंक सभी को पता होनी चाहिए। तो सभी जाके सर्च करें और एंड सभी को पता लग जाएगा गूगल के इमेजेस में जाके। परफेक्ट, थैंक यू। हाँ यार, हाँ थैंक यू। यही चीज मैं चाहता हूं कि सब लोग रिसर्च करें बिफोर दे ओपन देयर माउथ। ऑलराइट, आई सी चिताली हियर एज वेल। हेलो चिताली। एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ जी, ये बोल रही थी कि एसएसआर वॉरियर्स ने नया विक्टिम ढूंढ लिया है। उधर सोनाली फोगाट की बहन खुद बोलती है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ है। आप आयरनी देखिए आप
कि इधर ये बोल रही है कि इन्होंने नया विक्टिम ढूंढा है, उधर सोनाली फोगाट की बहन बोलती है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ है। राइट। तो इसके बारे में भी जैसे मैंने पहले भी बोला, मैंने कल भी बोला, द सैडेस्ट पार्ट कि हम सबको ट्रोलर, हम सबको यूजलेस, हम सबको वेस्ट पीपल, अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। उसके अंदर मैं इन सबको यही जवाब देना चाहूंगा, यहाँ पर ये सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मूवमेंट है। इससे बड़ी ऑर्गेनिक मूवमेंट एटलीस्ट मैंने अभी तक अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी। मे बी ब्लैक लाइव्स मैटर वाज डेफिनेटली समथिंग, बट दैट वाज स्टिल समथिंग, एक अलग ही लेवल पे शुरू हुई थी और एक अलग ही लेवल पे गई थी वो भी। बट अगर ऐसा देखा जाए तो किसी के लिए भी इस तरह की मूवमेंट मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं सुनी। नाउ द अदर थिंग अराउंड दिस मूवमेंट इज दिस इज ऑल रन बाय पीपल who got impacted by the sudden and tragic murder of सुशांत सिंह राजपूत। मैं बार बार मर्डर बोलता हूँ, मैं कल स्पेस में भी मर्डर बोल रहा था तो मुझे बार बार बोला रहा था कि who are you, how can you say कि यहाँ पर आपको कैसे पता मर्डर, आप वहां थे। मैं वहां नहीं था, पर मैंने वो सब चीजें जो जो पब्लिक डोमेन में देखी हैं, जो चीजें मैंने, जैसे एक छोटा सा वो बोला था कि वो कपड़ा जिससे सपोजिडली कहा जा रहा है कि सुशांत को लटका हुआ था फैन के साथ या सीलिंग के साथ, उस कपड़े को प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग में लेके जाना, इट वाज रियली रियली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाँ आपको पता होगा, आप एजेंसी होंगे, आपको पता होगा कैसे लेके जाते हैं, आप बता दें हमें। सो दे वर लाइक जस्ट पोकिंग अराउंड। यस सुनील जी, बिल्कुल सही आपने कहा। देयर वाज सम ड्रिंक में जो केमिकल, लास्ट जो मैंने पढ़ा था, अगेन थिंग्स माइट हैव चेंज्ड ओवरनाइट, मेरी रात में ऑब्वियसली देयर वुड हैव बीन मोर रिसर्च, सम मोर रिपोर्ट्स, बट साफ बताया जा रहा है कि एक क्लिप जो सर्कुलेट हो रहा है, मैंने भी डाला था वहां पर, इट इज वेरी क्लियर that Sonali Fogart was completely squashed, and she was out of her, she did not have any control over her body. She could not even walk properly, वो walk करके भी नहीं जा रही थी, तो उसको उसका मैनेजर जो था वो साथ होल्ड करके लेके जा रहा था, and then after a few steps she just sat down. So it was definitely everything. अच्छा ये कंफर्म हो गया होगा, सो एमडीएमए, इमेजिन। सो और इसका वीडियो क्लिप है, दैट somebody or the manager डालते हुए का भी क्लिप, वीडियो क्लिप निकला है और वो भी है। सो इट वाज ऑल अ प्लान मर्डर। और कहा जा रहा है, जो मैंने लास्ट सुना था, एंड मे बी यू गाइस कैन ऐड, कि both of them have accepted and acknowledged that they killed her for property and political reasons. मुझे नहीं पता कि ये इतनी scapegoat की तरह इसको यूज किया जा रहा है इन लोगों को या नहीं, but at least they have acknowledged, they have admitted that they have committed that crime and they have killed. Imagine the poor kids, the poor family, किस तरह से एक अपनी बेटी और अपनी मदर को लूज करने के बाद at least they are speaking, they're voicing it out. And it's I'm glad at least इस केस में वो सुशांत, जैसे सुशांत की सोनाली फोगाट की सिस्टर ने बोला, I hope this case doesn't become like सुशांत सिंह राजपूत केस। तो इस तरह से एग्जैक्टली ये भी एक क्वेश्चन हो रहा था कि कैसे एक 34 साल के लड़के को कंट्रोल करते थे एंड ऑल दैट स्टफ, एंड किसी को भी ड्रग देके, किसी को भी इस तरह के केमिकल्स देके, खाने में मिला के माइंड को बिल्कुल तोड़ देना, एक इतने स्ट्रॉन्ग फिजिकल और मेंटल स्ट्रॉन्ग बंदे को ड्रग्स देके, इस तरह के केमिकल्स देके उसको वीक करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। But people won't understand. Anyways, I can go on and on and on, and we will definitely do more into that. But I see Chitali as well. Hello, Chitali. Welcome, and please go ahead. Hi, Varun. Good morning. My voice is audible? Yes, loud and clear. Okay. So, Varun, I just wanted to know, is it a 30-minute show? Because we're No, running this is around not. 46 minutes. It's No, not, no, no. right? This is not. This is an open mic.
Okay. So can I just get 5 minutes? I just wanted to share something. Can I go ahead? Sure, please go ahead. Okay. So first of all, the first thing which I would like to say about the space of yesterday. Okay. See, it was nothing surprising and shocking. I was listening to you. Let me tell you one thing, Varun. See, we are a strong community of SSRians, right? There are a lot of people, a larger number of people who are non-SSRians. They have close groups in WhatsApp, in Telegram, everywhere, and वहाँ पे ये सारी discussions होती है, you know, about humiliating this, SSR warriors, humiliating stuff about this movement. कल क्या हुआ था, कल यही चीज स्पेस में डिस्कशन हुई इन अ ओपन प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाई ये चीज पब्लिक डोमेन पे आया, सबके सामने आया. ओके, सो इट वाज नथिंग सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग, एंड आई एम ग्लैड that these things came in public domain last night. Now, whenever this sort of people conduct it in any space, they have two agendas. The first thing is that जो neutral masses है, जो neutral audiences है, जो जो शायद movement का part नहीं है अभी, but in future में they can become a part of our movement, उनको influence किया जाए, spread such kind of defamatory narrative so that the neutral mass can get influence. And the second point is the SSR warriors who are fighting relentlessly, उनको demotivate किया जाए. These are the two prior agenda to conduct this kind of spaces. And over there कुछ चीज pre-planned रहता है. Because if you are conducting a space, it should be an open mic one. You should need to give mic to all the listeners who is joining your space. How come you are passing the mics to only people whom you know pretty well, and जो normal SSRian थे उनको आप कैसे mic नहीं दे रहे थे? Because you know pretty well, if the mic will be given to them, they will come with a strong point, and that thing they won't be able to control it. But luckily yesterday बहुत लोग थे हम लोग का कैंपेन का जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था 20-30 टाइम उनको वेटिंग में रखा गया. इट वाज प्री प्लान्ड. हम बस सिलेक्टिव लोगों को ही माइक देंगे बोलने के लिए. We will not give the mic because our agenda is to spread our narrative to a huge number of people. लोगों को इन्फ्लुएंस करें, लोगों को डिमोटिवेट करें. बट luckily you got the opportunity to speak and you have put the facts so well. And yesterday on behalf of all of us, you have gone and you have spoken things so well. So Varun, see, we are so proud of you, truly proud of you, and thanks for doing that. And and luckily they haven't blocked you, right? That means they can check your profile, whatever we are doing in our movement, they can monitor that from your profile. I'll take it is a good part. So Right. first of all, I would like to convey we are super proud of you. I have seen yesterday in many of the WhatsApp groups, people were talking that yeah, Varunji has spoken so well. He has given the answer too well. So thanks for doing that, and just keep up the good spirit up always. More strength and more power to you, Varun. Thank you. Thank you, And Chital. वरुण, Yeah, मूवमेंट के बारे पे मुझे 2-3 पॉइंट्स बोलना है. Can I go sure. ahead? Please go Okay. ahead. See, Varun, the thing is that we are on this movement for like we have crossed 2 years, right? 14 जून में 2 साल हो गए, अभी मूवमेंट को 2.5 साल होने वाला है. So we need to put our focus on this part, that हम लोग कैसे इस movement को in a larger scale में how we spread the movement. अब मूवमेंट का 2 साल होने के बाद भी still if some of the people are spreading this narrative, don't go in this YouTube channel, don't speak with that guy, he will throw you from the movement, he will sideline you, he will use you. This is just not done. I mean, people need to be logical and be sensible, right? Is an organic movement for me and everyone. They have joined this movement by their own wish, by their own willing power, and we are continuing the movement by our own willing power. For me, मुझे किसी ने movement पे लाया नहीं, मैं अपनी dedication से काम कर रही हूँ, and same goes with everyone.
goes for you. You are putting your own effort, you are running your own YouTube channel, right? So यहाँ पे कोई किसी को रिमूव नहीं कर सकता, कोई किसी को साइड लाइन नहीं कर सकता. तो ये जो नैरेटिव चल रहा है, और वरुण ये नैरेटिव में ना जब से मैं शायद आपका यूट्यूब चैनल ज्वाइन की हूँ मार्च में से, तब से मैं सुन रही हूँ. कभी कॉल में सुनती हूँ, कभी व्हाट्सएप में सुनती हूँ, कल ट्विटर में मैंने सुना, मैंने बोला आई थिंक अभी ना थोड़ा सा बात करना चाहिए. If people are spreading these things, so in this movement no one can use anyone, no one can throw anyone. So who all are spreading this narrative, they should better refrain from spreading all these things, right? People need to be logical and sensible. And tell me one thing, we were discussing about some PRs, but those PR, they are not a part of our movement. What about the people who are into this movement and they try to demotivate our warrior? That is my point. People who spread this narrative, they are in our movement, their tweets come in our timeline, still also you're spreading this narrative. It's just not done. People should be logical and sensible. Someone who stays in US, I stay in Calcutta, he is predicting that somebody can use me and throw me out of from this movement. That means that person has amazing creativity. So better they Magical should power. use their creativity Magical somewhere power. else. Yeah, no, not behind me at least. And one more point I would like to convey: let's be respectful and humble enough for each other. This is the minimum thing each and every warrior deserves in this campaign, right? We are fighting this cause for 2 years. We are putting our literally blood and sweat. I will not say dedication effort. ये सब ना शायद बहुत कम weight वाला word है. We are putting our blood and sweat for this movement. So we're not expecting much. We are expecting everybody deserve a minimum respect and humbleness from everyone. So people should be respectful and decent enough while when they interact with anyone in timeline. Differences of point of view happens, but that doesn't mean anyone will stoop too low and they will use below the belt language for anyone. That is just not done, just not acceptable. I have seen these things many times happening. So yesterday night I thought, no, it's a time I should go and I should speak out. I don't even care what people think and how many people will come in a group to target me. But if I find something is wrong, I think I should go and I have done my part. I have given my answer. So that is the thing, Varun. I just wanted to convey. 2 साल movement का हो चुका है, सबका energy थोड़ा थोड़ा drain हो चुका है. अभी जितना energy सब में बचा है, see, everybody has their own responsibility in their life. Somebody do their job, somebody run their family, somebody have their studies in college, this kind of stuff. तो सबको अभी तो COVID भी नहीं है, things are pretty normal, lifestyle has become normal. तो जितना energy हम लोगों में है, let's put the energy towards making impactful things in this campaign. How we can make impactful things? Let's not stoop to the extreme low for anyone. And let's not use below the belt language. And Varun, for you, I just wanted to say one thing. You have a lot of patience. I know you are going through with these things for a lot of time. मैं तो आपके साथ शायद 4-5 महीने से I'm connected with you. But मैं शायद 100 बार देख चुकी हूँ these things coming in the Twitter timeline. So you handle things with a lot of patience, Varun. More power to you, more strength to you. But at the same time, if somebody is using below the belt language for any fellow warrior, we need to stand up. That is my take. Yes. And rest, let's all together contribute our best for the movement, whichever way we can, so that definitely we can ensure justice for Sushant. And Varun, all the best for your platform. Just keep doing all the wonderful and amazing session you are conducting for this movement. Thank you. Thank you, Chatali. I will respond. Let me take Rudra and Anam. Uske baad I will definitely speak. So if you have time, stay on the screen. I'll definitely reply back.
Okay. या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे बोला कि हाँ कुछ एविडेंस शेयर करने आया हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आज अकेला नहीं आया हूँ, मैं अपनी आर्मी के साथ आया हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय आर्मी। आर यू रेडी गाइस? ठीक है, 3 2 1 बॉयकॉट बॉयकॉट यस। Sweet. या तो ये है मेरी आर्मी, छोटी बच्चों की आर्मी जो कि अवेयरनेस फैला रही है बॉयकॉट बॉलीवुड की। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रही थोड़ी पॉजिटिविटी। आर्मी हमारी बढ़ रही है और सारे एज ग्रुप के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे। अब आते हैं उस एविडेंस पे जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कि पहली बात मैं नाम लेके बोलूंगा, ये जो सोनम महाजन है, अच्छा हुआ इसने स्पेस किया। क्यों मैं बोलूंगा अच्छा हुआ स्पेस किया? ये अभी एक स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन देने जा रहा है। जो चीज मैं वरुण आपको प्राइवेट चैट में शेयर कर रहा हूँ, उसको आप मैं चाहता हूँ पब्लिक को दिखाओ। शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वाओ, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। तो मैं आपको अभी प्राइवेट में शेयर करता हूँ, इस लिंक को आप प्लीज दिखाओ थोड़ा। तो जो आप लोगों को अभी स्क्रीन में दिखेगा, पैरेलली मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हम सबको पता है संदीप सिंह का क्या रोल है एसएसआर केस में, राइट? वो उसका जो दोस्त बना फिरता है। तो अब ये संदीप सिंह का किस किस के साथ भैया कनेक्शन निकला था? सोनू निगम और ये साहिल खान के साथ। और सोनू निगम के का किसके साथ कनेक्शन है वो आप लोग स्क्रीन में देख लो। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो जो कोलाज है, और ये सारी चीज बता दूं, कोई भी इमेजेस या प्रूफ जो है एडिटेड या फोटोशॉप ऐसा नहीं है, सारे ओरिजिनल है और उसकी आर्काइव लिंक है। मैं चाहता हूँ इमेज को आप भाई थोड़ा बड़ा कर दो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ है, ये सारे ऑथेंटिक हैं, उनके वेरीफाइड प्रोफाइल से हैं। तो अब आप खुद समझ लो कि अगर ऐसे लोग आके जो है टारगेट कर रहे हैं एसएसआर सर को, उनकी फैमिली को और एसएसआरियन एसएसआर वॉरियर्स को, तो इट सिंपली मीन्स कि वी आर एब्सोल्युटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब ये रही, ये कुछ वो प्रूफ्स हैं और ये सारी चीज़ों का एक आप कह सकते हैं ना, ये है रियल कनेक्ट द डॉट्स। और सबसे अच्छी बात इस मोमेंट की ये है कि जिसने भी कुछ गलत करना चाहा, पहले भी किया, आज के डेट पे आप एक चीज़ देख लो, चाहे मूवमेंट के अंदर या बाहर, डिवाइन पावर ऐसा इतना पावरफुल है कि वो इंसान जिसने जिसने भी कुछ गलत करना चाहा, वो इस मूवमेंट से अपने आप दूर हो गया। या तो फिर बाहर की देखो तो जो बड़े बड़े उसमें से लोग हैं वो आज किसी ना किसी कारणवश जेल के अंदर है या कस्टडी में है या उनकी एकदम बैंड बजी पड़ी है। और खासकर बॉलीवुड की तो बहुत ही ज्यादा बैंड बजी पड़ी है। तो नाउ एक ही इसमें चीज रहेगा जो मतलब मेरे को लगता है ज्यादा सही रहेगा कि फॉरगेट अबाउट एनी अदर पीपल। पीआर वाले आके तो गंदा गंदा बोलेंगे ही, उनका काम ही ये है और वो उसके लिए उनको पैसा भी मिल रहा होगा या किसी और तरह का भी शायद फेवर मिल रहा होगा। तो व्हाट शैल वी डू? अगेन इसके लिए एक अच्छा तरीका यही निकल सकता है कि एक्सपोजे चलता रहे, कभी भी ऐसा कुछ एविडेंस मिले सामने रखो, प्रूफ मिले सामने रखो, आगे बढ़ते रहो, बॉयकॉट बॉलीवुड चलाते रहो। एक बात आप लोग बस ध्यान रखो, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम बॉयकॉट बॉलीवुड और जस्टिस फॉर एसएसआर इज जस्ट प्योरली डिस्ट्रैक्शन, नथिंग एल्स। तो बस यही चीज शेयर करनी थी कि शी इज कनेक्टेड विथ सोनू निगम एंड सोनू निगम इज कनेक्टेड विथ संदीप सिंह एंड साहिल खान। रेस्ट मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो हम सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। Perfect. Thank you for sharing this, Rudra, and I think ऐसी बहुत सारी और चीजें निकल के आई हैं जिसके बारे में मैं सिर्फ एक पॉइंट पे थोड़ा सा जो डिसएग्री करता हूँ कई लोगों के साथ भी, और मैं फिर वही कहूँगा, इन द पास्ट अगर पुरानी बातें करें हम आज से 2 साल पहले, everybody, I would say 80 to 90% of the people who are part of this movement, they enjoyed every single thing around Bollywood. सब ने वो गाने, वो एक्टर्स, वो एक्ट्रेसेस, सबको भगवान बना के उनको अलग ही लेवल पे रखा, अपने पैसे बर्बाद किए बॉलीवुड की मूवीज देख के। उन चीज़ों पे हम बैठ के हंसे हैं, जो चीज़ें आज की डेट में हमारी आंखें खुली और हमने उसके बारे में बात करना शुरू किया। बट 2 साल पहले तक हम सब लोग भी इसी का पार्ट थे, हमने भी बहुत इंजॉयमेंट ढूंढा इन चीज़ों के अंदर। सो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, कई बार मैंने कहा है और आगे भी मैं कहता रहूँगा कि इवन दो देयर विल बी थिंग्स इन द पास्ट जो किसी की भी होंगी, कल को यही इस इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं जिसकी स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी जा सकती है और हमारे प्रोफाइल्स, हमारी चीज़ों को लाके कि ये है वो लोग जो बॉलीवुड के लोगों के साथ या इनके साथ,
तो हमें सिर्फ इतना कि 2 साल में जो चेंजेस आए हैं, हमें उन 2 साल की बात करनी है, हमें उन 2 सालों के बाद की बात करनी है, फ्यूचर की बात करनी है। मोर इम्पोर्टेंटली इन लोगों की जो जो स्पेस की जो टोन थी, या कुछ सेशंस की टोन जो होती है, हमें वो देखना है कि वो ये क्या कर रहे हैं। वाइल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंटी इंडिया जो कैंपेन चला रहे हैं, एंटी हिंदू कैंपेन चला रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, और हैरानी की और द सैड पार्ट इज a lot of our Hindu brothers and sisters, they are also joining with them, which is very sickening, very sad. यार मैं ये लेकिन नहीं भाई कह एक चीज का डिफरेंस है, एक डिफरेंस है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि या ये दोनों सिनेरियो इन माय ओपिनियन, अगेन लेट्स एग्री टू डिसएग्री, आई गेस आप एग्री करोगे कि वो है डिफरेंस ये है कि हम लोग, ऑफ कोर्स मैं भी कहता हूँ इसी लाइव में कि ऑफ कोर्स आई वॉच्ड बॉलीवुड मूवीज, और सभी बहुत से लोगों ने देखे हुए थे जब बॉयकॉट बॉलीवुड मूवी मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, बट हमने जब उनकी गलतियां पता चली तो हमने बॉयकॉट मूवमेंट शुरू किया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कुछ लोगों का जो एक गलतफहमी दूर हो जाए, बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट सुशांत सर के मर्डर के इंसिडेंट्स के बाद ही जो है टूल पकड़ा, मतलब शुरू हुआ। अब आते दूसरी चीज पे, या जब आपको कोई गलत चीज पता हो कि हो रही है तो अब उसको आप कंडेम करते हो अगर आप सही हो तो। अब इन लोगों का क्या है जो लोग चला रहे हैं, अगर ये लोग पीछे पास्ट में गलत लोगों के साथ एसोसिएटेड थे तो क्या एक बार भी खुल के कंडेम किया उस चीज को कि हाँ मानते हैं हमसे ये गलत लोगों के साथ संगत थी, बट अभी ऐसा हमारा स्टैंड है। तो वही चीज है, तो अब अगर आप खुल के कंडेम नहीं करो, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं उनको साथ दे रहे हो। दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि जो ये सोनू निगम वाला केस है, ये तो हाल फिलहाल का है जिसमें ये इंसिडेंट्स वाला है, जिसमें कि वो एंटी नेशनल्स को सपोर्ट कर रहा था, और कोई इंसान आज के डेट में अभी भी उसके साथ अगर खड़ा है तो इसका मतलब यह है कि वो अपना डिसीजन ले चुका, जो आपने बहुत अच्छे से कहा कि उस 2 साल के दरमियान और दो अभी जो फ्यूचर में जो होने जा रहा है ये मायने रखता है। और ये जिसमें मोस्टली इंसिडेंट्स मैंने शेयर किए हुए हैं ये सारे इसी 2 साल के अंदर है, क्योंकि मुझे पता है ये लोग कहेंगे कि भैया तुम लोग तो पास्ट से वो कर रहे हो। पास्ट की बात नहीं है, ये 2 साल में जो है सुशांत के मर्डर के हुए 2 साल हो गए, तो इसी 2 साल के अंदर के हैं। और अगर कोई कंडेम नहीं कर रहा है मतलब वो साथ दे रहा है बॉलीवुड वालों का, सीधी सी बात है। एब्सोल्युटली। और मैं एक एक कमेंट यहाँ इस वाला ये कोलाज आपने बनाया, उसके अंदर एक फोटोग्राफ के लिए तो मैं बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर, हालांकि मुझे पता है मैं खुद भी पंगे में पड़ सकता हूँ, बट मैं बोलूंगा, दिस रेडियो स्टेशन ओनर इन ह्यूस्टन, जो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कराता है यहाँ पूरे यूएस में, कनाडा में, उसके साथ सोनू निगम ने, even after knowing that he is anti-India, and he is against our country, our religion, and whatnot, उसके बावजूद सोनू निगम stood by this man, was something which was really very very sad to see, कि हमारे कंट्री के खुद के इतने, जिनको हमने इतना, वो कहते हैं ना, प्यार दिया, इज्जत दी, इतना मान दिया, जिनको इतनी एक रिस्पेक्टफुल जगह पे बिठाया, वो लोग ऐसे लोगों के साथ अगर सपोर्ट, अनफॉर्चुनेटली कहें या जो भी कहें, इवन आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम, आई डिड नॉट, अगेन किसी को मिलके आपको ये नहीं लगता कि यार ऐसा है, बट बाद में जो मुझे चीजें पता लगी उसके बाद, दिस मैन इन ह्यूस्टन is on my blacklist as well. I really don't even want to even talk about him. मैं उसका नाम तक नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर्स हैं, जो आज भी उसके साथ, just because he's a very influential person here in Houston in US, तो और उसको अभी भी वो इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, which is very sad. हालांकि he has been boycotted by our government, our agencies, and people should not be working with him, but it's very sad to see कि आज भी उसको सपोर्ट किया जाता है. All right, thank you for that. Yes, Anam, please go ahead. Hi Varun, hi everyone, and I just wanted to roar again for 302 for Sushant, and just want to remind you that please don't get your feelings hurt with the trollers and everyone that will want to go against the movement, because they don't realize that we are here bigger. Our movement is just not for Sushant; it's bigger than that, and so we have to keep motivating ourselves and keep ignoring. There be some people for against
against it, but we should not give any importance to them and give any like time and thinking about them. So we should just keep going as we are going, and we will reach our justice soon. I'm feeling that we are close to a justice, so we should keep on rowing and keep positive and keep uniting people. And I just want to say hi to Chetali as well. Thank you very much. All right. Thank you so much. And I'm always good to hear you and your voice. And thanks for always motivating it. मैं देख रहा हूँ, not only YouTube, uh, you just spread the same word everywhere, जहाँ भी जाती हो. So please keep doing that. I think once in a while, it's very good for everyone to, hear this again and again and again, कि हम लोग यहाँ क्यों आए थे, हम किस लिए fight कर रहे हैं. And Sushant is the only sole cause. So thank you so much for that. No All problem, right. Arjuna. Thank you. Before I again respond to what Chitali said, एक last चीज जो मैं जरूर यहाँ बात करना चाहूंगा. अशनूर जी, आपका जो question है, could you share what you relayed in that space, Varun? Please remember the reason you joined, the goal, not other issues and agendas. Thanks. So I'll be very honest. I've एक space हुई थी आज से कुछ दिनों पहले, इसी individual ने रखी थी. And it was again during my working hours. I could not join. I joined at the very last, बिल्कुल end में जाके मैं सुन रहा था और मैंने request भी भेजी थी कि accept my mic request. She did not accept it. And मैं सुन रहा था कितना गलत बोला जा रहा है, कितना गलत agenda set किया जा रहा है around Sushant. His character was being maligned. His actually was being assassinated. Family के बारे में थोड़ा बहुत बात मैंने सुना, and I did not know. Then I realized a lot of other warriors were there, और उन्होंने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीजें ट्राई करी कि उसको समझाने की, बट नहीं हुआ. बट सोशल मीडिया पे मैंने देखा बहुत लोगों ने डाला. Yesterday again this space happened, and fortunately I had a little bit of time, not a lot, because उसके बीच में फिर मेरी मीटिंग आ गई and I had to again drop off. But जितनी देर मेरे पास थी, luckily I got an opportunity to join. What I went there was basically they telling that Sushant died because he was a depressed soul. Sushant died because he was, maybe in love and failed love and all that stuff. Sushant was not murdered. He committed suicide, which has been told by the Scotland Yard of Mumbai police. किसी ने वहाँ एक आर्टिकल डाला हुआ था ऊपर, where it read, the news article said Supreme Court has given a clean verdict to Mumbai police. And I countered that कि जिस तरह से investigation हुई, जिस तरह से वहाँ से evidences को लेके जाया गया, those were not the things that agency would do. So मैं वो सब चीज़ों के बारे में counter कर रहा था. Then she brought up points around how Priyanka Di was like manhandling or abusing the help of Sushant. एक हमने clip देखा है जहाँ पर they were talking about the money that was being swindled by that guy, वो जो helper था, जो money manage करता था, and they were a little aggressive. तो जब मैंने उसके लिए बोला कि अगर मेरे घर में भी कोई चोरी करेगा, मेरे घर में मेरा ही हेल्पर या मेरा सर्वेंट takes money and transfers it from my account to his account, और चाहे चोरी करेगा, तो मैं उसको बिठा के डिनर टेबल पे उसके साथ डिनर नहीं करूंगा. मैं भी उसको थोड़ा आराम से, फिर गुस्से से सच जानने की कोशिश करूंगा. So that is the thing that I wanted to explain. And then they were like, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, आपके घर में होता होगा, आप ऐसे कर. I mean, they were so abusive and aggressive, and I really did not understand कि मैं इस टाइम पे do I really continue? Do I really give them facts? Murder के बारे में there are so many evidences which are available, but they were not ready. फिर उसके बाद they were trying to get a little personal as well, and then they started supporting Riya Chakravarti कि बिचारी के साथ ये किया, बिचारी के साथ वो हुआ, उसको तो ऐसे नू की मतलब डॉटर इन लॉ की तरह जैसे रूठ के चली जाती है कि भाई उसका सामान ले गए, ये करो ना. दे वर लाइक नॉनसेंस स्टफ्स. एंड देन थोड़ा बहुत मैं भी पंजाबी के अंदर फिर मैंने भी एक दो चीजें बोल दी. बट द पॉइंट वाज, it was really totally uncalled for,
totally unwarranted. And मैं अकेला क्यों, वहां पर और भी लोग थे. Just give everybody an opportunity, an equal opportunity to speak. That was the only request. Yes, we can agree to disagree. I don't mind, being like questioned कि ये आपको कैसे पता, वो कैसे पता. And I'll be more than happy to acknowledge अगर मैंने कुछ गलत किया या मैंने कुछ गलत बोला या मैंने कुछ गलत ट्वीट किया, more than happy to acknowledge that as well. But जिस तरह से वहाँ चल रहा था, इधर से क्रॉस फायर हो रहा है कि they were not even ready to listen. End of the day, I think I agree with what Girija ji said and a few more people said on the call. I think एक time तक you should just ignore them, and you should listen, report them, and then if they cross a certain limit, then take legal action or take any kind of action, and let the family do it, because if they are you know uh, publicly harassing, and there are many cases of such people. ये एक के बारे में हम क्या बात करें, मैं तो किसी ट्वीट पे भी लिखा था, एक ढूंढोगे हजार मिलते हैं यहाँ पर ऐसे लोग. They are personally attacking you day in day out. Sushant definitely is, again, sorry to say that, and I'm gonna say that with full humility. सुशांत सिंह राजपूत इज अ बज़वर्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. जिसको भी विजिबिलिटी चाहिए होती है, जिसको भी एक फेम चाहिए होता है, लोगों ने तो सेशन बना के अपने पर्सनल एजेंडाज रन किए हैं. नाम सुशांत का रखेंगे सेशन स्क्रीन पे और बात अपनी सारी शेयर कर देंगे. तो सो ही इज डेफिनेटली अ बज़वर्ड. सेम चीज ये ब्लू टिक हैंडल्स भी अब यूज करने लग गए हैं, और हमारे तो बीच में बहुत सारे लोग आए हैं ऐसे, हमने बहुतों को देखा है. They use Sushant and now they're nowhere to be seen talking about Sushant. हम लोग अब तो कई लोगों को मैंने देखा है, they are literally begging कि can you please start talking about Sushant? Can you please do this about Sushant? Nothing. बस यूज किया सुशांत and they moved on, which is very sad. तो मैं सिर्फ वही कहूंगा कि ऐसी spaces, yes, while it kind of rattles us as well and irritates us as well, it should not. Please do not get rattled. Do not respond or revoke. Do not react to such nonsensical people. Uh, Give them logic, give them data, give them the meaningful content, and let them still and then they were speechless. जब मैं एक दो चीजें facts वहाँ रखी थी वहां पर, they were like contradicting कि क्या कर रहे हैं भाई ये, क्या अच्छा हम इसको कैसे काउंटर करें. So, just be very, very careful around what you say and what you do. All right. So I think 1 hour, 30 minutes, few more minutes, but let me just respond. Chitali, again, thank you so much for all that you said. I will try my best कि सारी चीजों के बारे में मैं कहूँ, but एक चीज मैं जैसे अभी भी बोला, you fighting back or anybody fighting back with abusers or trollers, कल मैंने एक छोटा सा सेशन किया था. The incident that happened in Dallas, abuser, मैं कहूँगा, a bully. I like to call these people abusers and bullies. अगर कोई एक abusers and हमारे केस में, हमारे सोशल मीडिया के स्पेस में, these are serial abusers. गिने चुने 5-6 लोग हैं जिनके prominently हम नाम ले सकते हैं, but no point of taking their name. ये जो serial abusers हैं, सेम चीज ये डैलस में जो हुआ एक इंसिडेंट जहां पर हिस्पैनिक लेडी अब्यूज दिस ग्रुप ऑफ इंडियन लेडीज, वहां पर भी 911 कॉल की और वहां पर जो डिस्पैचर था उसने भी यही बोला, डू नॉट एंगेज विद दिस पर्सन, स्टे बैक, होल्ड ऑफ, वी आर देयर. सो यहाँ पर भी मैं सोशल मीडिया पे भी मैं यही चीज बोलूंगा कि जितने ये ट्रोलर्स, अब्यूजर्स, बुलीज हैं, दे आर नोन. मुझे कुछ लोगों की तो ऐसे भी याद है, कहा गया था, हैशटैग भी चला दिए गए थे कि वी शुड अबॉलिश देम, बॉयकॉट देम फ्रॉम दिस मूवमेंट. और उस टाइम पे मेरे को थोड़ा अजीब भी लगा था, हंसी भी आई थी कि यार ऐसे भी कैसे हो सकता है कि हमारे बीच में, हमारे साथ के लोग, उन्हीं के अगेंस्ट ये चीजें हो रही हैं. बट देन आई रियलाइज कि उन लोगों के साथ कितना गलत हुआ, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ अगेन. सो द सेम सेट ऑफ पीपल, एंड दिस इज अ ग्रुप, एक ग्रुप है, एक I'll take a little bit of a dig here right now. There are a couple of people who post some tweets, और उन tweets के अंदर there are, कई बार मेरा मन करता है कि वो पूरा स्क्रीनशॉट डाल दूं. 4 से 6 या 7 कुछ IDs हैं, हैंडल्स हैं, जो कंसिस्टेंटली वो इंडिविजुअल डालता है.
those are the entire group और gang एक बन गया है जो सबसे बड़े bullies and trollers हैं, you know, and they are the ones who are constantly जगह जगह जाके लोगों की ट्वीट्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, जगह जगह जाके अपने खुद की प्रेजेंस दिखा रहे हैं, because they want to create their own, you know, credibility which they've completely lost. And unfortunately, you know, they are themselves to be blamed. Nobody else can do it. Neither a Chetali, neither a Abhay, neither a Varun, nobody can do anything about that, because end of the day you are responsible for your own वो कहते हैं ना कर्म के भी और साथ में अपने नाम के लिए. So you've lost your credibility, you've lost your name, you've lost your, और कई जगह जाके आज की डेट में वो सब लोग, you know, हर जगह गाली भी खा रहे हैं, सब जगह उनको पड़ रही है. But unfortunately, if you involve or, you know, you fight back with them, it's like, you know, वापस तुम्हारे मुंह पे ही आएगा वो चीज. You know, मैं एक और एनालॉजी देता हूँ which is the सुअर की एनालॉजी, कि जैसे हम बॉलीवुड के कुछ लोगों को कहते हैं, जैसे अभी अर्जुन कपूर ने किया, राइट, he started to give that pushback कि भाई हमने बहुत देर इग्नोर किया तो अब हमें करना चाहिए, तो अब उसका रिस्पांस उसको खुद ही मिल गया. तो इन सुअर के साथ और फाइट करोगे तो खुद को ही अपने आप को you'll disturb yourself. So I would say, you know, you should just ignore such people. You should just, you know, not talk in their language and let them rot in their own, you know, nonsense. That's the best thing that you can do. क्योंकि इन लोगों के लिए, be it a boy, be it a girl, be it a man, be it a woman, be it a elderly person, for them it really doesn't matter. So we need to really keep our own modesty in our own hand, you know, and let them show their upbringing. Let us show our. I know you wanted to kind of, you know, talk to people and make them understand. मैं भी यही करने गया था. So I'm also in the same boat, Chetali. We all try our best because that's our upbringing. That's how we've been brought up, and that's what we want to do, कि हम लोगों को समझा सकें. And if at least एक बंदे को भी हम समझा पाए अगर, it will be like, I will feel very happy, and I expect the same. You were also hoping the same. Unfortunately, there are few people, and again I'm gonna say, you know, these 6, 7, 8 people, they are not gonna change. They will continue to do all this, और यही same लोग you know, इस मूवमेंट के अंदर भी यही कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं लोगों के DMs में, मैसेजेस में, फोन्स में. प्लीज स्टॉप. जब आपको पता चल गया कि ये लोग आर नॉट गोना लिसन, जैसे आज हम जिसके बारे में बात कर रहे थे जिसने स्पेस की, same thing is happening. Let's not even go there because it's not worth it. All right, I see Rejoy also join, and since you know, he's been waiting, so please go ahead, Rejoy, and then I'll take Ayush. And welcome, Rejoy. Rejoy, glad to see you here. Hope you're enjoying the days in Calcutta. Hi. Please go ahead, Rejoy. Yeah. Can you hear me all? Yes, but don't talk in Bengali now, okay? No way. Okay. Thank you, Varun. I will quickly. I'll be in this session, but I'll quickly give you two news. A news which will be very interesting to you. Perfect. Now we all know that the films which had been released in the last 2 weeks, that had gone for a toss. Okay, even a film which got released yesterday also is going towards the same direction. And the coming films also will go into the same direction. Yeah. I am sharing something. I may not be able to disclose the name of that person, but somehow I'm in WhatsApp with that particular person in Bollywood. He knows me quite well, and my purpose of maintaining relationship or whatever friendship is of a different reason, which my mission is straight. Yeah. Maybe कुछ लोगों के साथ मेरे को कुछ information gather करने के लिए I have to go out of my way. You understand what I am trying to say? Absolutely, agree. So I cannot mean, but that person today called me up and said, I told him that I will be in Mumbai on 1st of October. And I would like to meet you. He said that, sure, are you coming with your family? I said, yes, I'm coming with my family. And honestly, I will be in Mumbai on 1st of October and 2nd of October, and then I will go to Shirdi, Sai Baba, Nice. and then come back to Kolkata. So that is the plan. So he said, please do come to my house.
And he also mentioned that are you seeing Bollywood films? I say, yeah, I'm seeing it. Well, yeah, because we are going through a very rough time. Do see what are the films being released along with your family. So Okay. that came as a big surprise to me. He's not in the category of Shah Rukh Khan, Amir Khan, but he's an actor. Okay, he was there in the 90s. Okay, Okay. now he's no more. He comes as a character role, and I met him in the airport, and we became very good friends. So now the point which I'm trying to drive out of this is that an actor, so the Bollywood scenario is pretty bad. They might not say it, they might not come down in this press conference and say, but they will never say that. But internally, they are literally having a tough time. This much, this I'm when I'm saying this, I'm saying this with a lot of confidence. And I'm sorry I cannot mention the name, but Varun, please believe me, Yeah, yeah, that yeah. message I can internally show You you. don't I can exactly internally, no. Joyji, I I'll can tell you something. You don't even have to mention that because I believe you. Why? It's just not this particular friend of yours. A lot of people, I'll also share something on the similar note. There is somebody from the same kind of fraternity, not a big name, but a little smaller name who interacts. This person has been trying to reach out to me and talking because he knows I am anti Bollywood. और वो मेरे को इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई चीजों के बारे में पहले भी हो चुका है ये अभी फिर शुरू हो गया है दे आर ट्राइंग टू लाइक मुझे डराने की कोशिश जैसे करते हैं ना इनडायरेक्टली कि अब देखना बहुत सारे लीगल एक्शन होंगे तुम पे तुम सारे जैसे लोग हो तुम्हारे पे तो मैं तेरे को तो समझा सकता हूँ तो समझा रहा हूँ एंड ऑल दैट सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट हु आर डूइंग इट because they all are और अर्जुन कपूर is the latest example right जिसने तो openly बोल दिया his body language everything showed that he's pissed but off. but this Arjun Kapoor idiot doesn't know that by saying this, he has literally helped this SSR campaign warriors to be more stronger, right? And Exactly. in the coming, I would say the SSR warriors should go on a monthly basis. This month we have two releases. That is Brahmashastra and the 30th one movie of Hrithik Roshan is coming. So let Right. us go like होता है ना अभी because CBI is not saying something. Okay, anything or I would say उस तरह से कुछ एनसीबीसी की तरफ से नहीं आ रहा है. So what is there in our hand is to boycott. इससे ज्यादा Right. हमारे पास कुछ है नहीं इस वक्त पर. Yep. And this particular actor also requested that see the films of stars' daughters. Oh, shabash. Okay, so they are really trying to do good films. Please support them. So I said I will definitely tomorrow. I'm in Kolkata, or I will be going along with my family to see the film. And you know very well I'm not going to go there. Huh. Correct. So let us continue the discussion. So I thought of sharing this Absolutely. information. No, thank you so much. This is very inspiring. And again, लोगों को इसमें भी गलत दिखेगा कि you know what? See, this is a pro Bollywood guy, Rajoy Sen Gupta, who's talking to people from Bollywood. He's and blah blah blah. But guys, this is how a sensible guy will react. You don't have to fight. You don't have to slap everybody in their face. Yeah. You do it with your actions. Your actions are louder than your words. So हर चीज बोल बोल के ढोल बजा के नहीं होती. You have to sometimes do something कि ये देखो मैंने अपना. And again, Rejoy doesn't have to justify himself in front of me or anybody. Rejoy क्या कर रहा है, Ayush क्या कर रहा है, and anybody, whatever they are doing, let them do it. Was stuffing the drink in her mouth. I will send it. Perfect. Thank you so much, Carolyn. All right. I see Shweta join as well. Yes, Shweta, welcome. And क्या कहेंगे आप? Hi, Varun. Hi, everyone. Good evening. Hello. And it's been long we've been connected, Varun. So really glad to see this live, come on this live once again. So this is a topic what we're following today.
is really apt. And as I was hearing, listening to Rijoy ji, yourself, uh, whatever we are doing, we know what we are doing, how we are doing, for whom we are doing. Okay, we are not supposed to justify, because कल का ही वो लाइव स्पेस का जो एग्जांपल हम अगर लें, बहुत सारी चीजें बोली गई थी एसएसआरियंस को. ओके फाइन, हमें अपने गोल से ऐसी बातें कहकर भटकाया जा रहा था. ओके फाइन, we still stand strong, we still know why we are doing this boycott Bollywood thing. And the other day, I think I had posted that our actions, which relates to boycott Bollywood, should not be stopping. Yes, I meant it. We should not be stopping, because personally, I have got these comments from layman जो SSR movement में नहीं है. उन्होंने कहा है कि तुम लोग जो मेहनत 2 साल से कर रहे हो ना, एक आम आदमी आज जाग चुका है. वो जानता है कि बॉलीवुड क्या है. हम जान चुके हैं बॉलीवुड क्या है. हम लोगों ने बॉलीवुड मूवीज देखना बंद कर दी हैं. And now we know the pain behind why you are fighting for this humble soul Sushant Singh Rajput. So that's the essence, that's the gist of it. Keep roaring, guys. We definitely are gonna win in this fight of justice for Sushant. And yes, क्योंकि बॉलीवुड ने ही हमारे सुशांत को खत्म किया है, we will make sure ये लोग बिल्कुल स्टैंड आउट ना करे कहीं भी. So that's my message for today for all. जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पैनल पे हैं, कमेंट्स में हैं, सबों से मैं यही कहूंगी कि जस्ट stand tall in your actions, stand tall in your words, stand by each other, stand. कल जैसे जो एपिसोड हुआ, and the way we ran to that space and we were standing by only वरुण, क्योंकि वरुण खुद एक ही स्पीकर थे वहां पे, बट एटलीस्ट हम थे वहां, सुन रहे थे. हेल्पलेस फील हुआ, बट एटलीस्ट आपने अपने पॉइंट्स रखे वरुण, टू द कोर. आपने बहुत अच्छी फाइट दी है उस बंदी को. एंड ऐसे ही आगे भी करते चलना है गाइज. ऐसे पीआर्स जो हैं वो आते रहेंगे. रिया चक्रवर्ती के पीआर्स आते रहेंगे, पेड पीआर्स. ताई की पीआर थी वो, इतना क्योंकि वो ताई को ग्लोरीफाई कर रही थी, वो ताई की पीआर थी. तो ठीक है, कोई बात नहीं. ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करके वी विल फाइट इट आउट. वी आर हिज आर्मी, सुशांत आर्मी, and hail Sushant's army. Thank you, Varun. Absolutely, this is Sushant's army. Thank you, Shweta. और मैं फिर वही कहूँगा, Shweta is also one of those individuals, who's faced a lot of backlash, abuses and whatnot. और फिर भी, she has stood her ground, and we all continue. यहाँ चिताली है, अभिषेक है, everybody, I think, on the screen has been trolled, abused, threatened. पास्ट में से चीजें निकाली गई हैं, प्रेजेंट में से और फ्यूचर की चीजें बनाई भी गई हैं. मैं तो यहाँ तक कह दूंगा, रिलेशनशिप्स भी बना दिए गए हैं. तो we are not gonna shut up anytime soon. Yes, and among जब ये बात आई ट्रोल की, वरुण just wanted to add, among the SSRians only, क्यों इन लोगों को जेलसी हो जाती है मुझे नहीं पता. भाई आप भी आइए, आपको किसने मना किया? ये कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं है कि मेरा, आपका, अभिषेक, चैताली, आयुष या रिजॉय जी का है. नो, हम सब ले सकते हैं इनिशिएटिव. अगर हम लेते हैं, उसमें जेलस होके आप यार एक लड़की के कैरेक्टर पे आते हो. आई एम स्टिल फेसिंग इट. आई मीन, बहुत ही फ्रेश एग्जाम्पल आज का मैंने जो आपको डीएम पे बताया था, वो मैं फेस कर रही हूँ. Again, a girl is being harassed and put to question for her character. Why? So बस यही चीजें हैं. चलो, इसको भी हम कॉम्बैट कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे. जी वरुण. Absolutely, we are getting stronger. और जैसे रिजॉय ने अभी एक पॉइंट बोला था, and I agree with that. That idiot, and I'm going to use his statement because I liked it. That idiot actually, motivated us all. और थोड़ा ज्यादा बढ़ गई उसके बाद. तो ऐसे और idiots 4-5 और करते रहे थोड़ी देर बाद, and they are going to make their own. वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि. तो ये इस टाइम पे जो कर रहे हैं, वो अपनी ही मूवमेंट, अपने ही अगेंस्ट जो मूवमेंट उनके चल रही है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर देंगे. So more power to them for motivating us all. Yes, Ayush, बताए क्या कहना चाहते हैं, and then I'm gonna go around the table as we go on. सर एक मिनट अभिषेक, आपके पास आता हूँ मैं. आयुष बोलो. Okay.
एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि चाहे किसी के भी पीआर आ जाए, एंड ऑफ द डे हम लोग यूनाइट रहना है, और इनके हर एक वो नौटंकी जो ये लोग सोशल मीडिया पे करते हैं उनको जवाब देना है। एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि किसी से बदला लेने के लिए कभी समय बर्बाद मत करो। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें अंत में कर्म को भोगना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और कर्मा ही तो है इन सब लोगों का जो आज की डेट में इनको हर जगह से, हर कोने से, हर हर नुक्कड़ कोने से घेर चुका है। इन सब का कर्मा दिख रहा है, और बाकी जो कर रहे हैं उनका भी अपना टाइम पे टाइम आएगा। सो वी कैन ऑल विश फॉर द वेरी बेस्ट एंड वी कैन जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। अपने काम पे फोकस करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, अभिषेक जी बोले जी। सर मैं पंजाबी च बोलांगा। श्वेता मैम ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। अरे हिंदी विच नो ਪੰਜਾਬੀ पंजाबी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ चल बोल बोल पंजाबी बोलना, फिर उसके बाद हिंदी की बोलना। जी जी But ਤੇ सर मैं I think everyone's voice is echoing. Can you just Tell take in your Punjabi time? and Varun will translate. या श्योर। अभिषेक का जब ऑडियो ऑन होता है तो एको होता है। 1 सेकंड। जब अभिषेक का फोन ऑन होता है, जब ये डिवाइस ऑन होता है तो सबका एको होना शुरू हो जाता है। सो यस, व्हाइल ही इज टॉकिंग रेस्ट एवरीवन शुड बी ऑन म्यूट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ही हैज टू बी ऑन म्यूट। सो ऑलराइट, गो अहेड अभिषेक, बोल की कहना चाहना है। सर मैं तो ये बोलना चाहांगा कि श्वेता मैम साडी शुरू ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬॉयकॉट ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਵਿਊ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕੀ ਕਿ ਬॉयकॉट ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬॉयकॉट ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੋ ਪੀਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ था। तो बस यही बोलना चाहता मैं। बिल्कुल। ऑलराइट, आई मीन ज्यादा नहीं रजोय, आई मीन टू फॉर एवरीबॉडी हु डजंट अंडरस्टैंड पंजाबी, सिर्फ इतना ही कह रहा है कि जिस तरह से श्वेता वीडियोस बना के और बॉयकॉट बॉलीवुड के कैंपेन्स करती है, आई थिंक एवरीबody watches it, everybody is like gets motivated. I think we all should continue doing what we are doing, अपने अपने वे, अपने अपने तरीके से कंटिन्यू करें। कुछ का तरीका होता है एग्रेशन और एग्रेसिव होके वीडियोस बनाना। आई थिंक दैट इज स्टिल बेटर देन गोइंग इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल एंड अब्यूजिंग देम। अब्यूज मत करना, मैं बार बार वही बोलूंगा, प्लीज नेवर एवर अब्यूज एनीवन। लेट एनी फूल मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ every single time. Let them make more sessions around Sushant, around anybody, or even us. अगर हमारे पे भी बनाते हैं, बनाने दो। Just have a smile on your face. Go with facts. जब facts दोगे, facts के ऊपर बात करोगे, and end of the day, Bollywood के जो भी सारी काली चीजें हैं वो छुपी नहीं है अब, they've all come out. We are not making up stories. We cannot make new stories, theories around certain people or certain things. It's all out and about. And then leave it on the people. You cannot force, I cannot force Abhishek, or I cannot force Chaitali के Chaitali और Abhishek ये वाला एक्टर है, इसको तो हम नहीं, बिल्कुल हम तो इसको पूरा सपोर्ट करेंगे, या इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। It's a personal choice. You bring things out, let people decide, and then continue fighting for that. All right, so I'm gonna wrap it up. So let's continue. Round the table. Rejoy, please go ahead. I think you wanted to share something, and then you wrap it. Yeah, the two things. First of all, in my last 1.5 months, twice I had the opportunity to travel by train. So while travel, you meet people, you talk to different people. So I don't keep quiet. Whenever I travel, I have a habit of understanding or talking to people. Now obviously kuch na kuch discussion mein Bollywood has come, okay, and in that discussion, let me tell you, there are many people who knows Bollywood is a gutter. That's a very positive thing. Secondly, a section of the people knows this bhaijan, the so-called bhaijan,
is the most rotten person in the entire Bollywood. It's not that after this incident we come to know about this Bhaijan. Bhaijan is not considered. He's considered as somehow as a mafia, or not mafia, but he's a Don man type picture. Now, regarding SSR, because my discussion was ultimately to come to that point, some of them still believe that suicide se mar gaya, but some people out of them, some said that it was very unnatural. ऐसा कैसे इतना talented लड़का? Then I took this opportunity and narrated step by step. रात माने we slept at 2 o'clock. वो discussion. So my point is, it depends from person to person, situation to situation. Whenever I get this opportunity, at least दो से 5 आदमी को बॉलीवुड का असली चेहरा सामने ले आता हूँ. Whether that person believes me or not, I'm least bothered. But whenever I say with conviction, so that at least वो लोग दिमाग में जाकर वो लोग सोचेगा. Ultimately, Bollywood देखेगा कि देखे ना, that is that personal choice. Okay. So this I have been doing religiously for the last 1.5 months, and I'm feeling a sense that there are people who might know about it, but if given some more informations, then they are able to come to the conclusion that Bollywood is literally a gutter place. This is one. Number two, I'm sharing another information as a very, very big producer who has a Bengali connection through his wife, and his wife and his uncle are family friends of mine through my mother. So they organize a very big puja in Mumbai that has been going on for the last 40-50 years, because their ancestors were big producers and directors. You will get to know a Bengali. Okay. Now with this Brahm Shastra, it is the upcoming movie of that particular production house. They are not yet they were about to come to that वो होता ना जो date, जो एक date release के date they decide on. They are unable to come to that date because they are seeing these movies are getting flopped one after the other. So that uncle, I had a talk. He said, "Are you coming to this Mumbai during the pujas?" I said, "Yes, I'm coming." So then we'll meet in that puja. It's in Mumbai का सबसे biggest puja है वो. Okay, so the point which I'm trying to tell you is that even in their family also discussion is going on कि इस तरह से अगर movies boycott होने लगा तो हम लोग का आगे वाला दिन चलेगा कैसे? चलेगा मतलब they have enough money to run 3 generations, but they also want to produce movie. If the movies are hit, then they have some more money in their pocket. So, but they are in such a disturbed state of mind that they don't know such big banner movies. They don't know कौन date में release करेगा. So this is something which the SSRians should take it up as a victory, moral victory. Right. That is all what I want to say. Thank you. Absolutely true. And I think these are, those signs that whatever we are doing, everything is happening and everything is happening in the right direction. So just keep the motivation high, guys, and let's keep on roaring. So thank you so much, Ajoy, for joining, and thank you so much for bringing some of these points. Always inspiring. Before you wrap up the session, can I just speak for 2 minutes? Yes, please go ahead. Okay. Varun, Rejoy, first of all, you have put a very good point. Thanks for putting the point. And, Varun, one thing just wanted to convey that, in this campaign, abhi aisa ho gaya na, like, yahan pe there is, a bunch of people who keep on doing that, hard work, all the campaign sort of stuff. And there are certain other group of people who always keep on putting their creativity in imaginary stuff. अभी तो इस campaign में people talk about the relationship as well, that imaginary stuff. Understand, I fail to understand how this is possible when two people they stay in two different country. मेरी तो समझ के बाहर है, and Shweta Devi was also there. She left,
अभी तो नया ट्रेंड है इस कैंपेन में, देखिए, you know one thing, the way we have contributed ourselves in this campaign, no one can point finger on our work. We have done our work in ground with so much efficiency and dedication. So नया trend है, if you can't point on someone's work, you just point on someone's character, and they are bringing up all this point, bringing relationship, किसी के साथ भी कुछ भी कर दे रहा है, and they talk things about in DM. So I think this high level creativity, I never knew, people have this sort of creative person in this campaign. तो इतना क्रिएटिविटी है अगर इन सब का दिमाग में, तो इंडिया में बहुत सारा क्रिएटिव वर्क है जहाँ पे क्रिएटिव दिमाग की जरूरत होता है. प्लीज कंट्रीब्यूट योर क्रिएटिविटी ऑन दोज स्पेसेस, नॉट विद इन आवर सेल्फ, इज नॉट नीडेड. ये नॉइज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. And second thing is, Varun, one important point which I wanted to say, if I'm coming on anyone's YouTube channel, that doesn't mean that I'm giving anyone content. That's the point. Because, every social media, either it be Twitter or it be YouTube, every platform have their own importance, right? If I'm doing some ground activity and I'm coming in your platform, my perspective is that I want to convey that message to a larger number of people. That is why I joined this platform. Yeah, and that doesn't mean that I'm giving someone content. And Varun, अभी 2 साल तक तो मैंने काम किया कैलकाटा का डिफरेंट जगह पे among the SSRian, but right now, luckily, from few of the months, I'm getting certain scope to join some of the events and talk about SSR case, not among the SSRian, but to another level of our society. I'm glad, I'm humble and honored I'm getting this scope. Abhi 15 August में I attended an event. I went there. I spoke about Sushant in that event. On that day, you was not available, and it was too much rush, so I couldn't join. In future as well, if I will be getting a scope to join somewhere, and if I am coming in your show, that means I'm just trying to convey all this thing to a larger number of people, and I think everybody should do that. If you are engaging yourself in any good cause, if you're doing any social activity, let it be going in an event, delivering a speech, or serving the society, helping needy people, or doing it a ground protest. Everyone should join a good platform so that your work can get spreaden enough in a larger number of people. So people who are having the perception that I'm giving content to someone, that is completely wrong. I think people should broaden enough their mind. So I thought it's an important point. So I can wait, Varun. Thank you. Sure. Thank you so Chetali, much, Chital. Yes, Vijay, Chetali, please go ahead. just one thing. Chetali, very well said. We actually I got to know you last 1 month because we had been communicating. But the way you are taking this mission forward, kudos to you. Please continue. There will be many people saying many things, blah blah blah. So forget it, and please to continue. And in case you need any help from Delhi side, let me know. Okay. Unconditionally, I'm always there with Varun, and he knows better than me. So the same goes with you also. Thank you. Uh, Thank you, Rejoy, for your kind words. I'll connect you. I'll talk to you over a call. Thanks. Perfect. Thank you so much. And I think this is what I say all the time. कि मेरा कुछ और contribution हो या ना हो, the only contribution I am always proud of is connecting like-minded people together, and hoping that we all continue to row together as one entity for the one goal, which is justice for Sushant. And again, एक बार मैं फिर repeat करूंगा, guys. Please, let's all be very, very careful, very mindful of how we treat others and how we talk about others. Let's not be abusive. Let's make sure our handles, our platforms, everything remains safe. That is the most important thing. And let's keep roaring for Sushant. Justice, we will continue the fight. And that's what I really want everyone to focus on. बाकी सब चीजें
we will handle on our own. So I'll continue with the sessions. Thank you so much, and we'll talk again. Yes, we will, Rejoy, we'll connect. And thank you once again for joining. And thank you, Chitali, Shweta, Abhishek, Ayush, Abhay, everybody who joined on the screen, Anam. And let's continue to roar for Sushant, and let's continue to speak and stand up for truth. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. I'll talk to you guys soon. Have a good day. Bye.